Today in this lecture we are going to discuss the basics of superconductivity. So it was found that at very low temperatures most of the metals, alloys and certain chemical compounds they loses their resistivity totally or resistance totally. That means their resistance or resistivity approaches to zero. So these compound or alloys or these materials are supposed to have uh, that current is passing through them freely because resistivity or resistance tends to zero. So therefore that phenomena of the material or that transition state is known as your superconductivity, और जो हमारा मटेरियल है उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टिविटी. सो उस टेम्परेचर रेंज को जिस जहाँ पे वो अपनी रेजिस्टिविटी टोटल लूज़ कर देते हैं उस टेम्परेचर रेंज को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड हीलियम रेंज. बिकॉज जो हमारा फर्स्ट सुपर कंडक्टर मतलब जो उसके भी किसके ऊपर किया था, जैसे लो टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम, लिक्विड हीलियम रेंज बोलते हैं. बिकॉज लिक्विड हीलियम कब, जो हीलियम गैस है वो कब लिक्विडिफाई होती है, 4 डिग्री केल्विन पे और -269 डिग्री सेल्सियस और -452.2 डिग्री फ़ारेनहाइट. इस लिक्विड हीलियम रेंज, इस लो टेम्परेचर क्रायोजेनिक्स पे क्या होगा, हमारी रेजिस्टिविटी बिल्कुल जीरो हो जाती है और टेम्परेचर हमारा जो मटेरियल है वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है सुपर कंडक्टर. दिस फिनोमेना ऑफ सुपर कंडक्टिविटी फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय योर कैमरलिंग ऑन्स इन योर लेडन इन 1911 आफ्टर ही दिस एस्टैब्लिश दिस लिक्विड हीलियम रेंज. जब उन्होंने इस लिक्विड हीलियम रेंज को क्या किया था, अटेन किया था. बट he was studying the resistance to temper relation for your mercury. So what he found that at this 4.15 degree Celsius degree Kelvin, your resistance or resistivity reduces or decreases very sharply. So his instruments measure the very sharp decrease of temperature. So therefore this was your liquid helium temperature range, and he was measuring for your mercury, and this resistance was your DC resistance. So the temperature in your zero magnetic field at which the resistance suddenly decreases or suddenly falls to zero is known as your critical temperature. So it is varies for that 0.1 Kelvin टू कितनी रेंज होगी इसकी, 210 केल्विन नियरली. सो जो हमारी जो फिनोमेना है सुपर कंडक्टिविटी का, इट ऑकर्स इन मैनी मेटालिक एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड आल्सो इन एलॉयज, इंटर मेटालिक कंपाउंड्स एंड डोप्ड सेमीकंडक्टर, या डोप्ड को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. So these are the materials which possesses the phenomena of superconductivity. So the range of transition temperature best confirmed at present, which extends to 90 degree Kelvin for the compound, that is yttrium, barium, copper oxide, and the lowest is 0.001 Kelvin for the element rhodium. तो ये जो बेस्ट हायर रेंज है हमारी, ये है इस कंपाउंड के लिए यट्रियम, बेरियम, कॉपर ऑक्साइड के लिए, और जो लोएस्ट है वो है रोडियम के लिए, दैट इज 0.000 केल्विन, अप्रोक्सीमेटली अप्रोचिंग टू योर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. सो सेवरल मटेरियल्स बिकम सुपर कंडक्टर. यहाँ पे हम टेम्परेचर की टर्म में बात कर रहे हैं, बट देर आर सम अदर मटेरियल्स विच बिकम सुपर कंडक्टर ओनली अंडर हाई प्रेशर. हाई प्रेशर रीजन में कुछ मटेरियल हैं वो क्या करते हैं, सुपर कंडक्टिविटी पोजेस करते हैं. फॉर एग्जांपल सिलिकॉन विच इज ए सेमीकंडक्टर, and it becomes superconductor at 165 kilobar pressure and critical temperature is 8.3 Kelvin. सो टेम्परेचर देखो लिक्विड हीलियम रेंज से ज़्यादा है, बट यहाँ पे प्रेशर क्या है, बहुत ज़्यादा है. तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पे, हाई प्रेशर रीजन पे कई जो हमारे मटेरियल है वो सुपर कंडक्टिंग जो हमारा रीजन है या सुपर कंडक्टिंग क्या बोलते हैं, फॉर्म को क्या करते हैं, अटेन कर लेते हैं. सो ये हमारा जो थोड़ी सी हिस्ट्री और थोड़े से जो फैक्ट है हमारे सुपर कंडक्टिविटी के लिए. और अगर हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा 25 केल्विन से ज़्यादा होगा तो उस सुपर कंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, HTSC. अभी इसी साल अक्टूबर 2020 में न्यूयॉर्क में फिजिसिस्ट ने क्या किया है, रूम टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी को
ये अटेन किया है. सो दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट डिस्कवरी विच कैन रिवोल्यूशनाइज योर इलेक्ट्रॉनिक्स, फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. बिकॉज क्या होगा वहाँ अगर रजिस्टिविटी बहुत कम हो गई तो हमारे जो कंडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में जो एनर्जी लॉस होते हैं, करंट लॉस या वोल्टेज लॉस होते हैं, वो क्या होंगे, बहुत कम हो जाएंगे. So it will be a kind of a revolution. So there is discovered that for carbonaceous sulfur hydride system it becomes क्या बोलते हैं सुपर कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर एट क्रिटिकल टेम्परेचर टू 87.7 plus minus. This is fluctuation in temperature, that means at 15 डिग्री सेल्सियस हमारे 15 डिग्री सेल्सियस पे हमारा क्या होगा, ये जो सिस्टम है ये सुपर कंडक्टिविटी फॉर्म को अटेन कर लेता है, स्टेट को अटेन कर लेता है. एंड प्रेशर इज आल्सो वेरी वेरी लार्ज, दैट इज 267 पॉइंट प्लस माइनस 10. तो 267 और इसमें जो एरर है मतलब जो फ्लक्चुएशन है दैट इज़ 10. क्या होगा 257 और 277 के बीच में प्लस माइनस 10 का मतलब ये 257 के बीच में जो हमारा प्रेशर रहेगा गीगा पास्कल गीगा पैस्कल मीन्स that is at 10 raised to power 9 Pascal. So it is a very high pressure range. So it was attained in your October 2020 इसी साल. So these were some effects about your superconductors means बहुत कम स्टार्टिंग में क्या था कि अगर हम टेम्परेचर को बहुत कम करते जाएंगे तो कि हमारा रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट बिकम्स जीरो, दैट मीन टेंस टू जीरो. सो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो टेम्परेचर फ्रीली मूव करेगा तो उस मटेरियल किस स्टेट में होगा, दैट विल बी इन सुपर कंडक्टिंग स्टेज एंड दैट मटेरियल नोन एज सुपर कंडक्टर. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस what is the effect of temperature on resistance. दैट मीन्स अगर टेम्परेचर हमारा बहुत कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस कैसे कम होगा, और वो रेजिस्टेंस अगर कम हो जाएगा तो करंट पे क्या इफेक्ट होगा, कि मतलब अगर रेजिस्टिविटी जीरो हो जाएगी तो टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा और रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और वो टेम्परेचर कैसे इफेक्टेड होगा उससे. सो नाउ वी विल डिस्कस दैट वेदर रेजिस्टेंस ऑफ सुपर कंडक्टर एक्चुअली बिकम्स जीरो और नॉट. ये सुपर कंडक्टिंग रिंग ले रहे हैं, हम देखेंगे कि टाइम के साथ करंट क्या हो रहा है, इसमें डिके हो रहा है कि नहीं. सो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सुपर कंडक्टिंग रिंग लेंगे. सो दिस इज़ द सुपर कंडक्टिंग रिंग हैविंग विच इज़ प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. सो दीज आर द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस. तो आप ये क्या करेंगे, जब बिल्कुल स्टार्टिंग में जब वो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन में होगा तो क्या होगा, इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगा थोड़े टाइम के बिल्कुल जो नॉर्मल स्टेट ही है. नॉर्मल स्टेट में क्या होगा, बिल्कुल जब हम इसको बिल्कुल जब प्लेस करेंगे तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन फ्लक्स पास होगी. थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से पास होगा बट इसमें थोड़ा सा करंट सेटअप हो जाएगा, करंट फ्लो होना इसमें स्टार्ट हो जाएगा. बिल्कुल थोड़े टाइम बाद क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाएगा पास होना पर, इसमें क्या हो जाएगा पूरी रिंग में क्या current persistent current will started to flow in the ring. So this is along the passage of time कि मतलब टाइम के साथ क्या हो रहा है, हमारा करंट यहाँ पे डिके हो रहा है कि नहीं, उसके लिए हम क्या इसको स्टडी कर रहे हैं कि थोड़े टाइम बाद क्या होगा, करंट के बिहेवियर में क्या चेंज आएगा जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे सुपर कंडक्टर को. सो फॉर दिस लेट अस कंसीडर ए सुपर कंडक्टिंग रिंग. सो and let it be exposed in your magnetic field B, external magnetic field B, which is varying. That means it is non-uniform because it is changing with time. So अगर magnetic field टाइम के साथ चेंज हो रही है तो क्या हो रहा है, उसमें करंट फ्लो होगा. मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो करंट फील्ड उसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा, इंस्टेंटेनियस करंट फ्लो होगा. बिकॉज फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है तो करंट भी क्या होगा, टाइम के साथ चेंज होगा. दैट मीन्स इट इज इंस्टेंटेनियस करंट. So then current it, that is instantaneous current it, will flow in the ring at a time and it is given by your Lenz's law. So according to Lenz's law, dB, the rate of change of magnetic field, into A is the area of this ring and this is minus sign बिकॉज माइनस साइन क्या होगा, डायरेक्शन आएगा करंट की. अगर करंट डिक्रीज होगी ये होगा अगर हमारा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ द करंट प्रोड्यूस विच अपोजेस द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज इट अपोजेस द कॉज विच इज प्रोड्यूसेस इट.
So that means this minus sign comes due to the Lenz's law. This is R I T. That means current is changing with time, instantaneous current. This is Ohm's law, and this is plus because this is ring having coil. So there will be inductance of that ring and change of current with respect to time. This is question number 1. So here A is the area of ring, R is the resistance of the ring, and L is the inductance of the ring. So if this B non-uniform magnetic field becomes 0, so this equation number 1 becomes, this will be 0. So therefore equation 1 becomes, that is R IT means instantaneous current because it is changing with time, L d I t into dt is equal to 0. क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बिकॉज ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आई टी डी टी प्लस ये जाएगा आर अपॉन एल, बिकॉज एल को इसको यूनिट बना रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन टर्म में. दिस विल बी आई टी is equal to 0. Question number 3. So this is the equation of linear differential equation of order 1. So therefore solution for this equation three is of the form, बिल्कुल सिंपल होगा, इंस्टेंटेनियस करंट है, दिस विल बी आई नॉट एम्पलीट्यूड एट टाइम t is equal to 0. e raised to power minus r upon l divided by into t. This is equation number 4. So it is clear from this equation number 4 that current decays exponentially. Current क्या हो रहा है? Current is decaying exponentially in the absence of any external changing magnetic field, and it eventually becomes 0. However, if the ring becomes superconducting, that is the resistance becomes equal to 0, so this term will be, this is raised to power 1, ये 1 ही रहेगा. So therefore if your ring becomes superconducting, that is R will be 0. So therefore I t instantaneous current will be equal to this I naught. So in other words, the current does not decay with time. So this current is called the persistent current, and this current produces magnetic field, and the presence of the magnetic field, so the presence of the magnetic field, that when the superconductivity was first discovered, that means it's initially it was proved that the resistance of superconductivity material actually becomes 0. So thus for your, in case of superconducting ring, the current will not decay with time. That means it tends to flow विद द पैसेज ऑफ टाइम. जैसे मतलब जैसे टाइम हमारा पास, जैसे हमारा टाइम जैसे टाइम फ्लो होता रहेगा, मतलब टाइम के साथ क्या होगा, हमारा करंट भी क्या होता रहेगा, वो फ्लो होता रहेगा, वो 0 नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, 0 है, तो रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो करंट हमारा क्या रिंग में फ्लो ही करता रहेगा. सो दैट करंट इज नोन एज परसिस्टेंट करंट. सो दिस इज परसिस्ट करंट. मतलब टाइम के नॉर्मल स्टेट में था, जब थोड़े से टाइम के बाद क्या होगा, करंट यहाँ पे फ्लो होने लगा सुपर कंडक्टिंग रिंग में,
उसके बाद में क्या होता रहेगा, वो पूरी रिंग में क्या होता रहेगा, फ्लो करता रहेगा, बिकॉज रेजिस्टेंस जीरो, तो फ्लो करता रहेगा, वो डिक्रीज नहीं होगा, वो डिके नहीं होगा टाइम के साथ. सो दैट इज what is known as your persistent current that does not decay with time. अभी हमने जैसे पिछले पिछले चैप्टर पिछले जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने देखा कि करंट का टेम्परेचर का मतलब क्या इफेक्ट हो रहा है, टेम्परेचर और टाइम का क्या इफेक्ट हो रहा है, मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ पे और मटेरियल की सुपर कंडक्टिंग स्टेज पे, कि जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है हमारा सुबह, तो हमारा रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है. सो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सुपरकंडक्टिंग स्टेज और सुपरकंडक्टिंग स्टेट. सो इट इज़ एक्सपेरिमेंटली observed that when a superconductor is placed in sufficiently strong magnetic field, the superconductor becomes a normal conductor. सो सिंपल वर्ड में हम बोलें कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है अगर वो इंक्रीज होगी तो जो हमारी सुपर कंडक्टिंग स्टेज है वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी. तो वो क्या होगा, वो सुपर कंडक्टर क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम्स ए नॉर्मल कंडक्टर. सो दैट मीन्स रेजिस्टेंस अगेन विल कम्स इनटू पिक्चर. दैट मीन्स अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वो इंक्रीज होगी तो हमारा रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज होगा. सो जो द फील्ड एट विच द सुपर कंडक्टिविटी इज डिस्ट्रॉयड दैट इज नोन एज योर क्रिटिकल फील्ड. जैसे हमारा टेम्परेचर था, क्रिटिकल टेम्परेचर की temperature at which the resistivity tends to decreases sharply, that is known as the critical temperature. And there is similar term, that is critical field. The field at which the superconductivity is destroyed is known as your critical field. कि जिस फील्ड की मतलब फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू जिसके बाद अगर फील्ड की एक थ्रेशोल्ड और मैक्सिमम वैल्यू और एक लिमिट है कि जिस लिमिट के बाद अगर हम फील्ड को बढ़ाएंगे तो हमारा सुपर कंडक्टिंग स्टेज क्या होगी या स्टेट क्या होगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी. तो उस फील्ड को हम बोलेंगे क्रिटिकल फील्ड. सो दिस क्रिटिकल फील्ड इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. एंड इफ वी प्लॉट दिस क्रिटिकल फील्ड, दैट इज एच सी से डिनोट करेंगे उसको हम. एच मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और इस तरफ टेम्परेचर हमारा. सो this is the form of the graph. This is your critical temperature and this is your critical field. So this is your superconductor and this is your normal stage. मतलब फील्ड की अगर इससे ज़्यादा वैल्यू होगी और टेम्परेचर की इससे ज़्यादा वैल्यू होगी तो हमारा सुपर कंडक्टर क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम्स ए नॉर्मल कंडक्टर. So it is also known as your this diagram, that is SC versus temperature, critical field versus temperature, is known as your magnetic phase diagram. This is known as your magnetic phase diagram. फेज डायग्राम मीन्स इसका फेज चेंज हो जाएगा, मटेरियल का फेज चेंज हो जाएगा, इट बिकम सुपर कंडक्टर टू नॉर्मल आफ्टर दिस वैल्यूज ऑफ क्रिटिकल फील्ड एंड योर टेम्परेचर. So it is found that the superconducting stage is stable only for certain ranges of temperature and magnetic field. So thus this relation between critical field and temperature is given as, that is SC T. It is a function of temperature. This is SC 0 minus T square upon critical temperature square. This is question number 1. So this is the relation between critical field and your temperature. So this relation shows that your curve will be parabolic. So it is a parabolic curve because it is square terms are here. So according to this relation, at temperature is equal to 0 Kelvin, absolute 0 temperature क्या हो जाएगा, this will become 0. Therefore SCT will becomes SC
0. So that means SC0 becomes SCT. SCT मतलब टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू आफ्टर विच conductor superconductor becomes normal conductor, and at temperature is equal to Tc. क्रिटिकल फील्ड क्या हो जाएगी हमारी 0. So this curve defines the boundary below which the superconductivity is present and above which the superconductivity is destroyed, and your material behaves as a conductor, normal conductor. So next is your CCB effect. So this was the equation. थोड़ा mistake से हमने थोड़ा there was a mistake. So it was basically SC0 into 1 minus T square on Tc square. So therefore at T is equal to 0 Kelvin, this factor becomes 0. This will be SCO as Tc is equal to SCO. That means जो हमारी critical field है that will be the this field. This is the boundary. This will serve as the boundary. So जो हमारे SC field होगी that will be this and at T is equal to critical temperature, SCT will becomes 0. So that means critical field वहाँ क्या हो जाएगी. उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा सुपर कंडक्टर क्या हो जाएगा नॉर्मल कंडक्टर हो जाएगा. So and there is this diagram is known as magnetic fields diagram, and there is another effect that is CCB effect. So it was initially thought that the bypassing a large current through the superconductor, a permanent magnet can be produced, but it was found by that is physicist Silsby in 1916 that magnetic produced in that way also destroys the superconductivity of the materials. So इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे अगर हमारा आयरन कोर है कोई तो वो क्या होगा दैट इज़ ए फेरोमैग्नेटिक, बट इसको अगर हम उसमें से अगर हम करंट पास करें तो क्या हो जाएगा वो और पर मैग्नेट बन जाता है, टेम्परेरी मैग्नेट बन जाता है. पर जैसे करंट को हम करने के बंद कर देंगे मतलब स्टॉप कर देंगे तो दैट विल नॉट बी परमानेंट मैग्नेट. सो दैट इज़ नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो सिंपली बाय सेम एनालॉजी ऐसा माना जाता था कि अगर सुपर कंडक्टर में अगर हम करंट पास करें तो क्या हो जाएगा दैट विल बिकम ए परमानेंट मैग्नेट. बट दैट परमानेंट मैग्नेट की जैसे अगर उसमें से हम करंट पास करेंगे, ज़्यादा करंट पास करेंगे, so it also destroys the superconductivity of the material. That is known as your Silsby effect. So next is very important, that is your Meissener effect, that is permanent diamagnetism. So that means Meissener and Oxenfeld found that a superconductor behaves like a diamagnetic material. That means कि जब अगर हम उसमें से जब कोई मटेरियल अगर वो सुपर कंडक्टिंग स्टेज को अगर अटेन कर लेता है तो अगर उसमें से अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करें तो उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो क्या हो जाएगा वो अपने में से मैग्नेटिक फ्लक्स को पास नहीं होने देता. दैट मीन्स इट एक्सपेल्स द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस फ्रॉम its state. So therefore that material superconductor behaves as a perfect diamagnet. So next is Meissner effect. So that means the Meissner effect is described as the phenomenon of expelling the magnetic flux by a superconductor is known as Meissner effect. मतलब कि अगर कोई जैसे नॉर्मल स्टेट में है जैसे कंडक्टर कोई मटेरियल तो क्या करेगा जब उसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा सब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा उस मटेरियल में से क्या हो जाएगा पास हो जाएगा. बट जब अगर हम उस मटेरियल को कूल करेंगे means it is मतलब by processes of cooling we make this material's normal state into superconducting state. But when this superconducting material reaches the superconducting state, the magnetic flux will not passes through this material. That means this material in the superconducting stage it expels all the magnetic flux lines. So that means
सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने में से पास नहीं होने देगा मटेरियल जब ये सुपर कंडक्टिंग स्टेज में होगा. दैट मीन्स इट बिहेव्स एज ए डायमैग्नेटिक मटेरियल और इट बिहेव्स एज ए परफेक्ट डायमैग्नेट. So this effect is known as your Meissner effect. So according to the Meissner effect, the magnetic flux density, that is B is equal to 0 for a superconductor. That is B is equal to 0. That means B is your mu naught into H plus M. This is the magnetic flux density कि जितना फ्लक्स उसमें से पास हो रहा है यार हमारे सुपरकंडक्टर से. H your मैग्नेटाइजिंग फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर हम जितनी मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं उसको. M is your मैग्नेटाइजिंग फील्ड मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मतलब उस अगर ये फील्ड लगा के उसमें से इतना फ्लक्स पास हो रहा है, उस फ्लक्स पास होने की वजह से उसमें कितनी मैग्नेटाइजेशन हो रही है. वेयर एम इज योर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. सो दिस इज इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 0. So therefore mu naught is absolute permeability. This cannot be equal to 0 for the material, therefore this is equal to 0. Therefore H is equal to minus M. Therefore this is equal to M upon H is equal to minus 1. This ratio of magnetization upon magnetic field intensity is nothing but magnetic susceptibility. So this magnetic susceptibility is equal to negative. So magnetic susceptibility is negative only for your diamagnetic material. So that superconductor behaves as a perfect diamagnetic material. So when it is placed in your magnetic field, this is your Chi is your magnetic susceptibility. मतलब मैग्नेटिक जो हमारा मटेरियल है वो मैग्नेटिक फील्ड को कितना ससेप्टिबल है कि मतलब उसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसको बोलते हैं, उस क्वांटिटी को बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. सो नाउ this condition leads to the contradiction to the Maxwell's equation. So thus for the perfect diamagnetism of the superconductor, so it cannot be explained simply on the basis of zero resistivity. जैसे हम पीछे बोल रहे हैं कि resistivity जीरो जाएगी तो हमारा मटेरियल क्या बन जाएगा सुपरकंडक्टर. So thus only on basis on that fact superconductor cannot be explained. सुपरकंडक्टर की परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म cannot be explained on the basis of zero resistivity or zero resistance. So since from Ohm's law, that is from a microscopic form of Ohm's law, electric field is equal to resistivity into J और J upon sigma. इसको हम ऐसे लिखते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ Ohm's law, J इंटू ई. J है हमारा क्या है, J हमारा होता है दिस करंट डेंसिटी एंड रो क्या है यहाँ पे, सॉरी रो क्या है हमारा 1 अपॉन सिग्मा इज 1 अपॉन रो, दैट इज कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी. इसको हम ऐसे ले सकते हैं इफ रेजिस्टिविटी is equal to 0 for superconductor, therefore ये 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, therefore इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 0 और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है. सो फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू माइनस dB अपॉन dt. सो ये अगर E 0 होता है क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगी 0 माइनस dB अपॉन dt. देयरफॉर B will be constant. So the meaning of this is obvious that magnetic flux flowing through the perfect conductor does not change even if it is cooled to the transition temperature. So hence we find that the zero resistivity leads us to the situation which says that the magnetic flux density, your magnetic flux passes through the conductor remains constant and it is not expelled. मतलब कि अगर रेजिस्टिविटी 0 होगी तो हमारा जो है ये एक्सपेल नहीं हो रहा है, मतलब ये कांस्टेंट रह रहा है, विच इज ए कंट्राडिक्शन टू द मैक्सवेल्स इक्वेशंस. So therefore we can conclude that the two properties, that is the state of zero resistivity this
एंड perfect diamagnetism आर परफेक्टली इंडिपेंडेंट टू each other, मैन एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंड नहीं करते. Thus for superconductivity we have E is equal to 0 and B is equal to 0.